हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कहा गया है ए गैसियस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 16 ग्राम ऑफ हीलियम एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. ओके, सो जो दो गैस है, द फर्स्ट वन दैट इज हीलियम. दिस इज द मोनोएटॉमिक गैस. ओके, सो 16 ग्राम. ओके, तो कितना मोल है हीलियम का? दैट इज मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास. हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? दैट इज 4. So number of mole of helium in 16 gram, that is 4. Okay, n equal to. And for oxygen gas, this is diatomic. Okay, diatomic. So the number of moles has been given as 16 gram. This is also 16 gram. So this is the number of moles in oxygen has been given. How? The mass is 16 divided by the molecular mass. That will be what? 16 into 2, that is diatomic. So that will be 32. So that will be half. That will be equal to 0/5. Okay. So now हम लोग को पूछा गया है ये दोनों को मिक्सचर को मिक्स करने के बाद द रेशियो ऑफ Cp/Cv ऑफ द मिक्सचर का Cp/Cv कितना होगा? ओके, सो व्हाट वी नो दैट Cp एंड Cv का दोनों का रिलेशन क्या है? As we know, the relation between Cp and Cv, what? That is nothing but Cp equal to Cv plus R. ओके, जो Cp का वैल्यू है, जो Cv का वैल्यू है, उसके साथ अगर R प्लस किया जाए देन इट विल बिकम द वैल्यू ऑफ Cp. ओके, सो फ्रॉम हेयर वी कैन डू दैट फॉर हीलियम. ओके, so for helium the value of Cv is what? For helium the value of Cv equal to degree of freedom divided by 2 into R. सो क्योंकि ये मोनोएटॉमिक है, सो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3 2 R. ओके, सो द हीलियम गैस का Cp कितना होगा? दैट विल बी 3R/2 प्लस R. ओके, क्योंकि दोनों का रिलेशन ऐसा ही है. सो दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी 5/2/R. दिस इज फॉर हीलियम गैस. ओके, सो फॉर सिमिलरली फॉर ऑक्सीजन गैस Cv कितना होगा? द Cv विल बी what? Degree of freedom, that is a diatomic gas, so that will be 5. So 5/2/R. And the Cp will be what? That will be 5/2/R plus R. That will be 7R/2. Okay. So this is the helium gas and for oxygen gas. अब पूछा गया है क्या, ये मिक्सचर जो है, मिक्सचर का Cv कितना होगा? So what do you know? The Cv of a mixture has been written as पहला गैस that can be denoted as N1, okay, into Cv1 plus N2 Cv2 divided by total number of moles of the gas. So here the Cv1, the number one gas is here helium. So Cv का वैल्यू कितना है? 3R/2. If we put the values, that will be what? The number of moles has been given 4. So 4 into 3R/2 plus this will be number of moles is 0.5 into that will be what? The Cv 2, that will be ऑक्सीजन का कितना है? 5R/2 divided by the total number of moles, that will be 4 plus 0.5. okay, this will become the Cv. okay, so now if we calculate the value of Cv, then it will be what? 6 divided by this, नीचे 4.5 है, so the sum out will be what? That will be, नीचे will be 18 and this will be 29. okay,
29 R by 18. This will be the Cp of the mixture. And what will be the Cp? Cp of the mixture will be Cp plus R. So that will be 29, 18 R plus R. Okay. So that will be 29 R plus 18 R. So that will be 47 R by 18. So अब पूछा गया है दोनों का रेशियो कितना होगा. ओके, द रेशियो विल बी व्हाट? Cp is to Cv पूछा गया है. So that will be Cp is to Cv will be what? 29. Cp will be 49. So that will be 47 R by 18 divided by 29 R by 18. Okay, so that will be 47 by 29. Okay, so by calculation it will be come out to be 1.62 near about. This will be 1.62. So our option B will be correct. So hope you understand. So let's move to the next one.